175 ब्रांच और 5 रीजनल काउंसिल जो है पूरे हिंदुस्तान में, उसके पदाधिकारी जो 6 और 7 पदाधिकारी हर ब्रांचों में हैं, वो सारे यहाँ, और उनका हम ओरिएंटेशन करते हैं कि पूरे साल में उनकी फंक्शनिंग कैसी होगी, उनके रोड मैप क्या होंगे और कैसे उनको पूरा साल चलाना है। तो उसका 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ चलेगा कल से, उसके लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और इसी सिलसिले में जो कल हमारी काउंसिल की मीटिंग हुई दिल्ली में 7 मार्च को, उसमें हमने जो 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उसमें पहला हमारा ये निर्णय था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम होती है वो साल में 2 बार होती है, मई और नवंबर में। तो इस बार हमने डिसीजन लिया है कि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की जो एग्जाम है वो 2 बार की जगह हम 3 बार करेंगे। तो हर 4 महीने में बच्चों को एक चांस मिलेगा वो जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर कर सके, और फाइनल की एग्जाम साल में जो 2 बार होती थी वो वैसे ही होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और दूसरा निर्णय ये है कि जो हमारी सीए फर्में हैं वो अगर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करना चाहती है तो सेबी की रिक्वायरमेंट है कि उनको पीयर रिव्यू कराना पड़ता है। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी फर्म में 5 पार्टनर से ज्यादा हैं, वो अगर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट के साथ दूसरा भी काम करना चाहती है तो भी उनको पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा। ये निर्णय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिया है और उसका अभी 3 महीने का ग्रेस पीरियड हमने दिया है। तो जून 2024 तक 5 पार्टनर और उससे ऊपर की जितनी फर्में हैं उनको अपनी फर्मों का पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा, तभी वो अटेस्ट फंक्शन कर पाएंगे। आज तक बंगाल में इतने सारे पदाधिकारी कभी इकट्ठा नहीं हुए। ये पहली बार है कि आज बंगाल कलकत्ते में 1200 लोग 180 लोकेशन से, 180 सिटी से यहाँ पर आए हैं। और आज जिस होटल में हम उनका प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो देख रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि बंगाल में इतना ग्रोथ हो रहा है। और जब ये सारे लोग इस तरह की अपने एक्सपीरियंस को लेके जाएंगे बंगाल से, तो नेचुरली है कि वो जाके भी स्प्रेड करेंगे। तो जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, उन सबको फायदा होने वाला है। अभी हमारी जो एग्जामिनेशन होने वाली है मई 2024 में, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ, रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए अपियर हो रहे हैं। 4,36,500 बच्चों ने सीए एग्जाम के लिए इनरोल कराया है, जो अभी तक हाईएस्ट है। इसका मतलब ये है कि आज के यूथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए रुझान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई सीए रंजीत कुमार जी अग्रवाल, प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ दिस ऑल इंडिया मैनेजमेंट कमिटी मीट्स सुशील भाई गोयल फ्रॉम कोलकाता, चेयरमैन ऑफ द ईस्टर्न रीजन संजीव सांगी जी, my colleague in the Central Council member, CA Dr. Raj Chawla ji, Vice Chairman of CP Committee Kyan Mishra ji, and respected media. It gives pleasure in Kolkata, 9th and 10th of March, we call all meeting. Has been set up under the Act of Parliament in 1949, and currently we are having 175 branches across the country, 200 study chapter and circle. So all the elected members of the all branches, more or less 7 to 8 members in the branch, so 175 branch multiplied by 6 and 7 persons, member of the city study circle and chapter, all are coming to Kolkata for orientation meets. This is the vision of President Sir. I on the same line. What the think, what my leaders think, that message has to be escalated to the each and every elected leader of the branches and study circle and chapter. So I will not take much of time. The President Sir is here. They will address you. Yesterday we have taken a lot of decision, so he will appraise about the decision taken at the council meeting. Thank you so much, sir. Over to you. Thank you, Purushottam Khandelwal ji. We have our Central Council member Sushil ji Goyal, Chairman of Regions. 3 Central Council member again Purushottam ji Khandelwal, Raj Chawla, and Gyan Mishra ji. Basically today we have called all of you. It's 2-3 important decisions we have taken in the council yesterday in Delhi on 7th of this March.
we had a 430th council meeting in Delhi, wherein the Ministry of Corporate Affairs Secretary, Dr. Manoj Govil, was also present. As rightly told by Purushottam Khandelwal, that today we have, tomorrow and day after, 2 days, Institute has 175 branches and 5 regional council and study circle and chapters. So all the leaders of these units had joined together for 2 days orientation. So almost 1200 leaders, 1200 chartered accountant spread across the country has joined here for 2 days, wherein the institute will orient them how they should function, what is the next year vision, and we will give them a guidelines and the roadmap how they have to function for next 1 year. That's why all these 1200 chartered accountants as a leader of the profession has joined, and they will deliberate for next 2 days. This is the number one. That's why we have called all the people here, and you have been also be called here just to a press briefing. As far as yesterday in the council meeting is concerned, that was the first time 430th meeting of this year started. And one of the most important decisions we have taken yesterday, the Institute of Chartered Accountant in India is running since last 1949, last 75 years. And we have a examination system wherein 2 times in a year, May and November, we used to take the examination since last 75 years. Now globally, most of the accounting body of the world, they have the option to give the students to appear as many times as they want. Paper wise, term wise, so many options are there. But the Institute of Chartered Accountant in India since last 75 years was following the same practice where 2 times in a year the student can sit in the exam and they can clear the examination. So yesterday, for the first time, the examination, we have 3 tiers of examination: foundation, inter and final. So yesterday, for the first time, foundation and intermediate examination used to have twice in a year has been increased to have a thrice in a year. So now the examination of this foundation and intermediate will be conducted 3 times in a year. First in the May, second in the September, and third in the January. So every 4 months, the student will get the chance to appear in the foundation and intermediate, because in our curriculum, in the revised curriculum, until unless you clear the intermediate examination of the both the group, you cannot start the articleship training. Now in the revised curriculum, the articleship training has been reduced from 3 years to 2 years, and in between the articleship training, there is no examination. So uninterrupted articleship training under a practicing chartered accountant, the student has to undergo for 2 years. So these 2 years, earlier it was 3 years, and in between the articleship training, they have to undergo the examination of the various level. Now in this revised curriculum, the articleship training is 2 years, and before articleship training, the student has to clear intermediate and foundation examination. So they were given two options in a year, 2 times they can sit. Now since they have to clear both the group of the intermediate before joining the articleship, they have been given option to 3 times in a year. So now they can, every 4 months, they can sit for the examination, they can clear, and then they can join the articleship. For final level, the old practice of 2 times in a year still continue, because the final examination, they are eligible only after completing the 2 years of articleship training. So this is the historical change the institute has taken since inception. That twice in a year has been increased to thrice in a year for foundation and intermediate only. Final level, the age-old practice of twice in a year still continue. So what are the advantages of this system? Now for every 4 months, the student can appear in the examination, and if he or she are not able to clear the exam in first attempt, they can immediately after 4 months sit in the next exam. And this process, they will help them to sit as many times they want until they clear the examination, and this will help them to reduce the 2 months from their preparation
So normally they used to sit for after 6 months. Now they can sit for within a 4 months of the examination. So this is the first time the institute has taken this kind of historical step so that the skill of the students can be tested on frequent basis, and this examination system has to be aligned with the global best practices. So we have taken a one step. Going forward, this 3 times can be 4 times in the years to come, depending on the requirement. But now we have started this system from 2 to 3 years. This has happened first time after the inception. So this is the one of the most historical step the institute has taken. That is for the information of all the. We have made a press release for this important decision, which I will circulate after this press meet. And already the May examination, which has already been scheduled from 2nd of May, already 4,36,000 students has enrolled for appearing in the CA examination. And this number is also highest so far. The number was earlier 4 lakh, 425, 410, 390, 375, but 4,36,500 students has been appearing in the May examination, which is scheduled. This is also a record so far, which means the interest of the student from the commerce stream are increasing to join the chartered accountancy course and curriculum. And why this chartered accountancy course is important? If you see the last year budget of the finance minister, she was talking about the 7 principle, Saptarishi principle, in which financial system was one of the 7 principles. And this financial transaction and financial system are regulated and governed by the chartered accountant. So they have a vision to 2047, how these 7 principles will work to achieve the vision of the government for 2047 as a developed country, in which out of these 7, financial system, financial sector is one of the system out of the 7 principles. And that's why the role and the responsibility of the chartered accountant is bound to increase going forward to make this India as a developed country. Whatever financial transactions are happening in this country, most of the transactions has to be certified or verified by chartered accountant. Whether you are in practicing or you are in industry. In the industry, the chartered accountant helps to prepare the financial statement as per accounting standard. And in the practice, those chartered accountants certify those financial statements as per auditing standards. So accounting standard and auditing standard both are prepared and recommended by the Institute of Chartered Accountants India to be notified by the Ministry of Corporate Affairs. So this is the important aspects we want to update you in this regard. Second, most important development decision we took yesterday, we have a peer review mechanism system where the chartered accountant firms are being peer reviewed by another chartered accountant firm and being done by the Institute of Chartered Accountants India. So what is the criteria? What are the parameters on which the firms is being peer reviewed? We have subsets of standards. What is the infrastructure? How many people are there? What is the auditing tool? What are the infrastructure, digital technology? How many software? How many manpower? What is the system they follow? All these parameters are there to see the firm is being peer reviewed and firm is being qualitatively educated to certify the financial statement of this country. So this peer review mechanism we have now last year increased. Normally the peer review firm are only entitled to do the audit of the listed company. This is the requirement of the SEBI. So the SEBI has given a circular earlier. If the chartered accountant firm is peer review, only they can certify the financial of the listed company. For unlisted company, peer review mechanism is not there. Last year we have decided, even if the firm want to do the unlisted company audit, and the firm having 5 partners or more, then that kind of firm is also required to be done the peer review by another CFO. This was not the requirement of the SEBI, but this is now mandated by the Institute of Chartered Accountants India on their firm. So that mechanism is there. We have just increased the 3 months by the
end of the June 2024, all the firms who have 5 partners and more has to be mandatorily do the peer review mechanism if they want to do a test function for any financial statement, listed or unlisted, doesn't matter. So if 5 partners or more chartered accountant firm want to do or certify any financial statement, that firm has to be peer reviewed by another chartered accountant firm facilitated by the Institute of Chartered Accountant India. This is the second important decision we have taken. And the third and most important decision we have already taken, that the institute has tie-up with the CNAG, Comptroller and Auditor General. There are 2.6 lakh panchayat and municipal body in this country. Out of these 2.6 lakh panchayat and municipal bodies, they are struggling to find a accountant to have a financial discipline in this panchayat and municipal body. So the CNAG has made a MOU with the Institute of Chartered Accountant India, wherein +2 pass student can enroll with the institute. The institute will train them online for 4 months, and after 4 months of training, they have to clear the examination conducted by the institute. After clearing that examination, the student will be jointly certified by the Institute of Chartered Accountant India and CNAG. Jointly, they will get the certificate, and those certified students, their name will be hosted on the website, and all the municipal bodies and panchayat, they can take these young qualified certified accountant for their services and for their requirement. So this is the important step the institute has taken as a partner in nation building and helping the Comptroller and Auditor General how to find the accountant. +2 students qualify, training 4 months, having the examination, and then they can be appointed as accountant in this municipal body and panchayat. And the entire this course curriculum fees is only 500 rupees. So this is the partner in nation building or social obligation role the institute is playing since last so many years, and they are helping the student to be a certified accountant, because in this country worldwide, the other country has the aging population and India has the youngest population. So other country, you are not getting the accountant or chartered accountant to certify the balance sheet and financial statement. Most of the accounting work of other country are already shifted to India post-COVID. Like in Rajarhat, so many accounting firm has been set up, and they are doing the accounting work of the work done in the outside India. So if a burger or a pizza or anything is selling in America or London, the accounting will be done in Rajarhat or a Gurgaon or a Bangalore and other places. So already the outsourcing work has already been shifted to India. So this is the important aspect, export of services from India to outside India. And this is the very, going forward, this is the one of the most critical and important area for young CA who want to pursue the chartered accountancy. Huge professional opportunity already has come to India and is bound to increase. So on that line, this accountant, which we have tie up with the CNAG, they will not only do the panchayat and municipal accounting, they will be helping the MSME sector of this country, and they can also do this outsourcing work which is already coming to India. So this is the in the Institute of Chartered Accountant India opinion, these are the one of the most important decisions the institute has taken to take this India forward, how this country can develop as a developed country in next 25 years, and what will be the role of the Institute of Chartered Accountant India. One of the most important, another important aspect we have taken, we have made a new committee this year, which is called aggregation of the CFO. There is a dream of the government also, how this Indian firm can grow big, and they can also cater to the global requirement. So if India can cater the globally in pharmaceutical sector, in software sector, why not in accountancy?
So this is a dream of the Institute of Chartered Accountants India, how the institute and its member can cater the global requirement and how India can be an accountant of the world. On that principle, we have formed a committee, aggregation of CA firm. There are 1 lakh CA firm in this country, and these firms, the institute is regulating through various mechanisms. Now, through this aggregation of CA firm, we will frame the guideline for networking, how this CA firm can network, domestic network and global network, how they can handhold through the mechanism of the Institute of Chartered Accountants India, and how this networking, handholding, providing them the best of the software, providing them the other important mechanism which they need so that they can join together, they can be a big firm, and they are competent to serve the global requirement. So this aggregation of the CA firm we have formed this year, and this committee will help to join and bring all this firm together. They can have a tie-up, merger, acquisition, they can form a network, and then they can cater to the global requirement. And the third and the last important decision we have taken as far as disciplinary mechanism is concerned. Now, in the disciplinary area, last year itself, we have 150 meetings, 150 meetings of the disciplinary committee and the board of discipline the institute have. In that 150 meetings, there are 440 PFO, prima facie opinion, various complaints the institute received. 440 prima facie opinion were considered by this disciplinary committee. Out of this 440 prima facie opinion, 366 cases, the hearing was completed. So out of 440, 366 hearing was completed in 1 year. And out of this 366 hearing which we have completed, 119 cases we have awarded the punishment. So 119 firm or a chartered accountant member were awarded punishment in last 1 year. So this is the disciplinary mechanism functioning of last 1 year, and this is increasing every year. So the institute, through its capacity building mechanism, all these cases we are speeding up, we are resolving in time bound manner, and we are trying to award punishment if the system or the situation required, and then we are closing down the cases. So this is the most important function as a regulator of the profession the ICAI is doing through disciplinary mechanism, and these are the important updates I want to share with all of you. With these 4-5 developments we want to share with you. Any query, any question you have, please you are free to ask. Thank you very much. सर एक क्लाइंट के आधार करने पर भी ये क्या पीयर मैकेनिज्म जो आप तब्दील कर रहे हैं तो ठीक है नहीं, पीयर रिव्यू फर्म को कराना जो ऑडिट में इंगेज है, तो पीयर रिव्यू फर्म का होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, और उनको अब हमने जो मैकेनिज्म बनाया, पहले था कि लिस्टेड कंपनी का अगर आप ऑडिट करोगे तब पीयर रिव्यू कराना है। हमने क्या बोला, अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं भी कर रहे हो, अनलिस्टेड का भी कर रहे हो और 5 पार्टनर से आप ज्यादा की फर्म है तो भी आपको पीयर रिव्यू कराना है। तो ये एक एडिशनल रेगुलेशन इंस्टीट्यूट ने लगाया है ओवर एंड अबव द सेबी रेगुलेशन व्हिच इज ऑलरेडी इन प्लेस। पहले अभी क्या होता है मैडम, मई और नवंबर में इंस्टीट्यूट की एग्जाम होती है, फिक्स है हमारा, साल में 2 बार एग्जाम होती है, और 3 हमारे स्टेज है एग्जामिनेशन, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। तो अब हमने क्या बोला है कि फाउंडेशन और इंटर की दो बार की जगह हम 3 बार एग्जाम लेंगे और फाइनल की 2 बार ही लेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है कि बच्चे को हर 6 महीने के बाद एग्जाम के लिए ऑप्शन मिलता था, अब उसको 4 महीने में मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चा एक एग्जाम में बैठा और पास नहीं हो पाया
तो विद इन 4 मंथ वो दोबारा बैठ के पास हो सकता है। तो हमने ऑप्शन बढ़ा दिए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सके। मैक्सिमम हमारा कोई लिमिट नहीं है, नहीं मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यस, उसका 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 रीजन इसलिए है कि पहले क्या था, हमारे यहाँ आर्टिकलशिप पीरियड के साथ साथ आप एग्जाम देते थे। पहले क्या था कि 3 साल की आर्टिकलशिप थी और उसमें बीच बीच में आप एग्जाम देते थे, आप 2 महीने की छुट्टी लेते थे, एग्जाम में अपियर होते थे। अभी जो नया करिकुलम आया है उसमें आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल की जगह 2 साल हो गई है और उस 2 साल में आपको कोई एग्जाम नहीं देनी है। तो ये फाउंडेशन और इंटर पहले पास करेंगे तभी आर्टिकलशिप चालू होगी। पहले नहीं था, पहले नहीं था, इसलिए हमने नए सिलेबस में चेंज किया। और अब फाउंडेशन और इंटर आपने पास करके जब आर्टिकलशिप चालू करेंगे और 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, उसके 6 महीने के बाद ही आप फाइनल में अपियर हो सकते हैं। 2.5 years रिक्वायर्ड टू अपियर इन द फाइनल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो इसलिए उसको हमने चेंज नहीं किया क्योंकि वो आर्टिकलशिप के बाद है और ये आर्टिकलशिप के पहले है। तो जब तक आप इंटर नहीं करोगे आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए फाइनल को हमने टच नहीं किया। इंटर के एक ग्रुप के साथ आप कर सकते थे। पहले था कि इंटरमीडिएट का एक ही ग्रुप करोगे, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो और बीच में फिर दूसरा ग्रुप पास करो। अभी क्या हो गया कि दोनों ग्रुप करना पड़ेगा तभी आर्टिकलशिप चालू होगा। ये हमारा चालू हो गया इस साल 1 जुलाई, लास्ट 1 जुलाई से चालू किया। एग्जामिनेशन का प्रोसेस इस साल हमने शुरू किया। जी 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 अभी क्या हो रहा है कि छोटी छोटी फर्में है, दो पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर की फर्में बनी हुई है, तो उनकी कैपेसिटी लार्जर ऑडिट की या ग्लोबल कैटरिंग की उसकी कैपेसिटी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि छोटी छोटी फर्में जो है वो तो रहें, लेकिन कई फर्में मिलके बड़ी फर्म बने। तो जब वो बड़ी फर्म बनेगी तो वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगी जो अभी नहीं कर पा रही। तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि आप एक साथ आओ, हम आपको टूल्स दे रहे हैं, हम आपको नेटवर्क बनाने का प्रोविजन दे रहे हैं। मर्ज, आप बड़ी फर्म बनो ताकि ग्लोबल, जैसे क्या हो रहा है कि अभी इंडियन फर्म जो नहीं है जो बाहर जाके कैटर कर रही है, बट हम ये चाह रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी कैटर करे। उसके दिशा में ये प्रयास है क्योंकि जब हम डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं तो हमें ऐसी फर्म चाहिए जो ग्लोबल, आज माइक्रोसॉफ्ट है या बड़ी कंपनी, उसकी भी रिक्वायरमेंट इंडियन फर्म पूरा करे जो आज नहीं कर पा रही। आउटसोर्सिंग क्या है कि जो बाहर में अकाउंटिंग का जो काम होता है, जो मान लीजिए यूएस में, यूके में जो कंपनियां हैं उनके पास अकाउंटेंट नहीं है और उनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन वो अकाउंट्स का काम इंडिया में भेज दिया। इंडियन अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन एक काम आता है, इसको पूरा करते हैं और उसको फिर ऑनलाइन भेज देते हैं और सब करते हैं, बड़ी छोटी सब करते हैं। एग्रीगेशन का ये तो अकाउंटिंग का काम है, दिस इज नॉट द ओनली वर्क। अकाउंटिंग के अलावा देर आर लॉट ऑफ अदर वर्क विच द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स आर डूइंग। मर्जर है, एक्विजिशन है, कंसल्टेंसी है। अभी खाली आउटसोर्स में अकाउंटिंग आया है। कौन सा? सारा ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन, कोई मैनुअल नहीं। सीएजी, सीएजी। Online, 4 months online training, all the models are there, 609 students already registered,
वी हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग देम। तो ऑनलाइन हमने मैकेनिज्म बनाया क्योंकि वी नीड द सेंट्रलाइज कंट्रोल बिकॉज दिस इज द ज्वाइंट सर्टिफिकेशन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएनएजी, दोनों का ज्वाइंट सर्टिफिकेशन है। तो वी कैन नॉट बी पार्टनर विद एनीबडी। सो हमारा पूरा कंट्रोल हमारे पास है। एंड सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो सेइंग द इंस्टीट्यूट हैज ए बेस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम, सो एग्जामिनेशन भी हम उसकी लेंगे और फिर उसको सर्टिफिकेशन देंगे। +2 ओनली +2 10+2 10+2 के बाद वो इनरोल कर सकता है जी। For May examination 4,36,500 students have already enrolled for the May examination which we are scheduled for this next after 2 months. It's already over. And panchayat. If we have certified them, if anybody want to hire them, they can serve them. आज अगर हिंदुस्तान में फाइनेंशियल सिस्टम जो स्ट्रेंथन हो रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी अगर फॉर्मल इकोनॉमी हो रही है, इस देश के 4-5 बड़े विजन हैं। 2047 में ये देश कैसे प्रगतिशील बनेगा उसकी फाउंडेशन डल चुकी है। अब इस सरकार का और बाकी संस्थाओं का जो फोकस है, कैसे रूरल एरिया से लोग अर्बन बने, कैसे फार्म पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होकर नॉन फार्म में जाए, कैसे इलिटरेट लोग लिटरेट बने, स्किल्ड कैसे बने। तो कैसे ये 4-5 पैरामीटर में जो फोकस है, तो पुअर पीपल होते नहीं है। वर्ल्ड वाइड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पुअर पीपल। द पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन द पुअर प्लेसेस आर कॉल्ड पुअर। पर्सन पुअर नहीं होते, प्लेस पुअर होता है। तो उस प्लेस को हम पुअर से वेल्दी बनाने की दिशा में ये जो प्रयास हो रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, रूरल को कैसे अर्बन बनाया जाए, इलिटरेट को कैसे स्किल्ड बनाया जाए, जो डिपेंडेंसी फार्म पर है उसको नॉन फार्म में कैसे लिया जाए, रूरल एरिया को कैसे अर्बन में कन्वर्ट किया, ये सारे जो पैरामीटर के जो मापदंड अभी बन रहे हैं, उसमें द कंट्री इज बाउंड टू ग्रो। और उस ग्रोथ में जो डिजिटलाइजेशन का जो सबसे बड़ा रोल है कि आज आप देखिए ग्लोबली जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 46% इंडिया में हो रहा है, पूरा वर्ल्ड का। इतना आप पेटीएम, यूपीआई, जितने भी तरह के आप देख पा रहे हो वो सारे इंडिया में हो रहे हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है एंड फास्टर है। अदर कंट्री में इतना फास्ट ट्रांसफर ऑफ मनी विद द लो कॉस्ट कहीं नहीं है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, अब इस डेटा को सर्टिफाई कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को ये अभी मैंडेट है कि जितने भी फाइनेंशियल डेटा इस कंट्री में क्रिएट हो रहे हैं उसको सर्टिफाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। तो जितना ग्रोथ बढ़ेगा, जितना डेटा क्रिएट होगा, उसका चार्टर्ड अकाउंट का रोल उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारा 2 रोल है, एक तो सर्टिफाई द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हम सर्टिफाई कर रहे हैं विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, तभी हमें ये मैंडेट मिला हुआ है। वी आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो आप बात कर रहे हैं, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले समय में जितने ग्रोथ पैरामीटर आप देख रहे हैं उतने ही ग्रो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को होने वाले हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले समय में यंग पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान की, उसका अट्रैक्शन सीए कोर्स की तरफ और बढ़ने वाला है। 119 जी, ये हमारा डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है जो हम हर मंथ हमारी मीटिंगें चलती रहती है। जो केस आते हैं उसकी हियरिंग होती है, फिर हम उसको पनिशमेंट अवार्ड करते हैं।
punishment, there are two kinds of punishment we have: Schedule 1 punishment and Schedule 2 punishment. Now these two, Schedule 1 and Schedule 2, range from warning to removal from 1 day to lifetime, or 1 day to 6 months, and the monetary penalty range from rupees 1 to 1 lakh in Schedule 1 and Schedule 2 1 to 5 lakh rupees. It can be together or standalone, depending on the wisdom of the committee. But these are the parameters in which punishments are being awarded. 1 lakh maximum Schedule 1 में suspension मिलता है, depending on the gravity of the misconduct. Either Schedule 1 का है तो कम है, Schedule 2 का है तो ज्यादा है. फाइनेंशियल पनिशमेंट रुपीज 1 to 5 लाख मैक्सिमम. Schedule 2 में 5 लाख, Schedule 1 में 1 लाख. Any other query? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 2 दिन जो चलेगा, हमने बंगाल, सिंस आई एम फ्रॉम बंगाल, तो बंगाल को ध्यान में रखते हुए सारे देश के जो नेता हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, उसको बंगाल में पहली बार बुलाया है, क्योंकि आई एम द प्रेसिडेंट फ्रॉम बंगाल. तो मैं भी चाहता हूं कि बंगाल की इकोनॉमी सुधरे, यहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना हो, टूरिज्म बढ़े, होटल इंडस्ट्री को फायदा हो. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हम बंगाल में कर रहे हैं, ताकि बंगाल हमार बांग्लाटा একটু গ্রো করে. एंड सिंस आई एम बंगाल सो आई हैव अटैचमेंट टुवर्ड दिस प्लेस. 1200 आ चुके हैं, 1200 फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. ये 1200 का फिगर है.